कामयाबी का सबसे पहला फार्मूला ये है कि आप कदम उठाओ। जो इंसान पहला कदम उठाता है तो कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा लेता है और उसकी मंजिल एक कदम से दूर रहती है। ये अल्फाज दुनिया के उस इंसान के हैं जो 27 साल जेल के अंदर रहा और अपनी जिंदगी का, जवानी का सारा हिस्सा जेल के अंदर गुजारा। ये दोस्तों वो शख्स नेल्सन मंडेला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कहता है कि मेरी कामयाबी के मुताबिक मुझसे इंसाफ ना करो, मुझसे फैसला करो कि मैं कितनी बार नीचे गिरा और दोबारा उठ खड़ा हुआ। ये उस दौर की बात है जिस दौर के अंदर बरतानवी साम्राज्य जनूबी अफ्रीका के ऊपर काबिज था और वहां पर ब्लैक लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, यहां तक कि उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। उस वक्त एक ऐसा इंसान था जिसने कहा कि मैं लोगों को जस्टिस और इक्वलिटी दिलाकर रहूंगा। ब्लैक फॉर्म लोगों को भी दूसरों के बराबर हकूक मिलने चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला 1962 में पैदा हुआ, 1918 में पैदा हुआ। 1962 के अंदर नस्ल परस्ती के हक के लिए खड़ा हुआ। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अंदर पैदा हुआ 1918 के अंदर। उस वक्त नस्ल परस्ती अरूज के ऊपर थी। साउथ अफ्रीका के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें उस वक्त काम कर रही थी, एक नेशनल पार्टी और एक यूनाइटेड पार्टी। नेशनल पार्टी के अंदर सारे के सारे गोरे ही मौजूद थे जिनका बेसिक मकसद ब्लैक फॉर्म लोगों को कुचलना था। वो ये समझते थे कि ये हमारे गुलाम हैं, इनको आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारने का हक नहीं। उस वक्त एक ऐसा चिराग उठा जिसने इस बात को दुनिया के अंदर बावर कराया कि ब्लैक लोग भी इंसान हैं, उनके साथ भी इक्वलिटी होनी चाहिए। वो इंसान नेल्सन मंडेला था जो एक इनकलाबी था, एक सियासतदान था और सबसे बड़ी बात एक इंसान दोस्त था। मंडेला ने अफ्रीका के लिए ब्लैक फॉर्म पहले सदर बने 1994 से लेकर 1999 तक रहे। ये पहले स्याह फॉर्म अफ्रीकन सदर हैं जो बाकायदा तौर पर डेमोक्रेटिक तरीके से मुंतखब हुए। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी तगोदौड़ की, बहुत मर्तबा जेल के अंदर रहा और 5 दिसंबर 2013 को ये दुनिया से रुखसत हुआ। मंडेला वो पहला इंसान था जिसका मकसद काले लोगों को बराबरी के हकूक दिलाना। ये एक ऐसा मोटिवेशनल इंसान है जो लोगों को ये मोटिवेट कर रहा है कि दुनिया के अंदर नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर आपका इरादा, आपकी कोशिश सही है तो आप नाकाम नहीं हो सकते। मैंने कहा पीछे से आगे बढ़े और दूसरों को ये बावर करने दें कि वो आपसे आगे हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए गिरना पड़ेगा और गिरकर उठना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के सारे सालों को, वो साल जो उसकी जिंदगी के पीक ईयर्स थे, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए स्ट्रगल की। इनके वालिद एक जागीरदार थे। एक मर्तबा बरतानवी मजिस्ट्रेट ने इनको तलब किया। तलब इस वजह से किया कि उनके पास से एक जानवर गुम हो गया, क्योंकि उनके वालिद Nelson Mandela was born on 18 July 1918 to the royal family of the Thembu tribe in Mbizo, British South Africa. His father's name was Gadla Henry Mfakanyiswa Mandela and his mother's Noskini Fanny. His original name was Ralalala and he got the name Nelson from a teacher at the age of 7.
He was a hard-working student and would go on to become a law major at the University of Fort Hare and the University of Witwatersrand. Afterward, he became a lawyer in Johannesburg, during which he introduced himself to anti-colonial and African nationalist movements. This video present the life of Nelson Mandela as a social rights activist, politician and philanthropist. First years as an activist. In 1943, Mandela joined the ANC African National Congress Party and co-founded its Youth League in 1944. After the establishment of apartheid, a system that promoted white supremacy and suppression of black people, ANC's members, including Mandela, made it their life mission to overthrow this injustice. Mandela rose to the rank of president of the ANC's Transvaal branch, receiving widespread attention for his role in the 1952 Defiance Campaign and the 1955 Congress of the People. Not surprisingly, he was increasingly unpopular among the white-only authority. In 1956, he was arrested for treason and served 5 years in prison. After discharge, along with his fellow ANC members and the South African Communist Party (SACP), Nelson co-founded the militant group named Umkhonto we Sizwe, the Spear of the Nation, and led an anti-government sabotage campaign. Unfortunately, he was re-arrested in 1962, this time sentenced to life imprisonment for conspiring against the nation. Prison life and rise in influence. Mandela spent the next 27 years in prison, transferred from Robben Island to Pollsmoor Prison and Victor Verster Prison. During 18 years staying in Robben Island, he and his comrades were physically and verbally abused by the white guards. Mandela's eyesight was also permanently damaged due to having to work at a lime quarry without glasses. Nonetheless, his influence as a human rights activist grew despite utilizing his freedom of reading and correspondence. He read and wrote tirelessly, reaching out to not only the black community, but also people of other races. In the 1980s, South Africa plunged into chaos due to socio-economic breakdowns. Violence burst out across the country, and many international banks withdrew investment from South Africa. Pressured by British Prime Minister Margaret Thatcher and bankers, President Botha reluctantly offered to release Nelson from prison if he rejected violence as a political weapon. Showing no compromise, he declined, stating that the ANC would renounce violence if the government did the same. This resulted in him being given solitary confinement, which worsened his tuberculosis condition. In 1988 he was transferred to Victor Verster Prison, and it was there that things changed for the better. He was housed in the relative comfort of a warder's house with a personal cook and used the time to complete his Bachelor of Law degree. While there, he was permitted many visitors and organized secret communications with exiled ANC leader Oliver Tambo. The new president of South Africa, Fr de Klerk, met him to discuss abolishing apartheid and had him released in 1990. Presidency and later life. In 1991, Nelson became president of the ANC and collaborated with President de Klerk to end apartheid peacefully, promising equal rights for everyone. Their fight for the peace of South Africa earned the pair the Nobel Peace Prize in 1993. His tireless fighting for what's right eventually paid off in the 1994 general election, which granted the right to vote to all races in South Africa. The ANC won and Nelson Mandela became the first black president of the country. Now with a new role, Nelson Mandela continued his fight for black people's rights by issuing policies to improve the living standards and facilities of black South Africans, seeking to relieve them from the pain of decades under oppression. He extended his humanitarian policies to making South Africa a country of equality, regardless of race and color. In 1999, Nelson Mandela withdrew from politics. But while he lived a quiet life in his final years, he continued to be an icon of peace and equality worldwide. In the same year that he retired, Nelson founded the Nelson Mandela Foundation, an organization that is dedicated to upholding the principles of equality, freedom, and peace. In South Africa, he is often referred to by his Xhosa clan name, Madiba, and described as the father of the nation. His pass away in 2013 saddened the world and left many in tears, but his status as a symbol of equality, peace, and humanitarianism will stay forever. What is your thought on Nelson Mandela? Do you think he is the most inspiring figure of human rights? Tell us in the comments section below. Thanks for watching. If you find this video interesting, please give us a thumbs up and share it with your friends. मेहनत के अंदर 27 साल के बाद कामयाब हुआ
350 साल तक बरतानिया राज साउथ अफ्रीका के ऊपर रहा, लेकिन अफ्रीकियों की हालात जिंदगी बहुत बदतर आज भी हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला ने उनकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए इकदाम किए। कहता है कि एक बुलंद पहाड़ पर चढ़ने के बाद आदमी को पता चलता है कि अभी और भी बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियां मौजूद हैं। कहता है कि अगर एक मुश्किल वक्त में एक मुश्किल चीज को आप हल कर लेते हो तो ये मत समझे कि बाकी तमाम चीजें आसान हो गई। एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आपका मुस्तकबिल और आपका इंतजार कर रही होगी। अगर आपके अंदर ये हौसला है कि आप उस मुसीबत से, उस मुश्किल से लड़ सकते हैं, तो फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर नाकाम नहीं होंगे। नेल्सन मंडेला को दुनिया की किसी ताकत ने नहीं तोड़ा। उनको यहां तक कि सर्दी के मौसम के अंदर बिना लिबास करके कई घंटों तक खड़ा कर दिया जाता था, उन्हें खाना तक नहीं दिया जाता था। 1994 के अंदर रॉबिन आइलैंड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, बल्कि आज वो एक टूरिस्टी मुकाम बना दिया गया। तो नेल्सन मंडेला अपनी आजादी के बाद जब वो सदर बने तो जेल का दौरा किया और बताया लोगों को कि मुझे यहां पर कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो मुझे ना दी गई हो। मतलब कि मेरी जिंदगी के अंदर हर तकलीफ को ही सामने रखा गया, हर तरीके से टॉर्चर किया गया मुखालिफिन की तरफ से कि मैं इस तहरीक को छोड़ दूं, मैं लोगों के हक की जंग लड़ना छोड़ दूं। लेकिन उस इंसान ने कतई तौर पर यहां तक कि अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया, जस्ट इसलिए कि वो लोगों को हकूक दिलाना चाहता था। नेल्सन मंडेला कहता है कि जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। अगर उस मकसद को पाना चाहते हो तो फिर स्ट्रगल करें, रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतों, तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहें। अगर आपने तय कर लिया कि आपने उस मकसद को, उस रास्ते को हासिल करना है, तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आपने तय नहीं किया तो फिर आप उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे।